Hello and welcome to another episode of Nahazuk More. मेरा नाम Uzair Yunus है. I'm director of the Pakistan Initiative at the Atlantic Council, and joining me today is Amber Rahim Shamsi as always. Amber, welcome to Nahazuk More. थैंक यू सो मच उजैर और आपने मेरा तारुफ तो करा दिया। कुछ प्रोग्राम की बात करते हैं। जाहिर है जो बड़ी खबर इस हफ्ते थी वो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च था जिसका इख्तिताम पिंडी में हुआ था, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में मईशत पे भी हम कुछ बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी। और फिर जाहिर है आर्मी चीफ का तैनाती बिल आखिर हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि कब तक समरी आएगी नहीं आएगी, क्यों, क्या मसला है, उस पर भी काफी बातचीत चली है। And I think that obviously marks it's a big shift as well, and you could see that from some of the developments subsequently. और फिर दो तीन और भी बड़ी खबरें थी जो दरमियान में हम विनर्स और लूजर्स भी बात करेंगे। उजैर के मेरे ख्याल में कुछ स्पोर्ट्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं उस पर कुछ बात नहीं कर सकती। बट लेट्स किक ऑफ। Speaking of sports, let's kick off. उज़ैर कल खान साहब ने अपने जो कई माह से वो अपने लॉन्ग मार्च कर रहे थे उसका इख्तिताम किया। पिंडी पहुंचे थे। बहुत महीने से हम इंतजार कर रहे थे, बल्कि मैं कहूंगी कि 1.5 महीने से खान साहब अपने जल से जुलूस कर रहे थे। बीच में कातिलाना हमला भी हुआ था, कुछ तकारीर हुई थी, कुछ जिसमें उन्होंने कुछ फौजियों के नाम भी लिए थे। ऐसा लग रहा था कि खान साहब मजीद एस्केलेट करेंगे, मजीद उनको कुछ शायद कुछ मिलेगा, मवाद मिलेगा या कुछ मजीद वो जो उनके अहदाफ थे, और हम अहदाफ पे भी बात कर सकते हैं कि क्या क्या था। अहदाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से करेंगे, which was the big question, how will he do it? So your take quickly. My take is कि I think कि जो इलेक्शन से बड़ा सिलेक्शन जो होता है पाकिस्तान में वो आराम से गुजर गया. I think it was anticlimactic at the end of the day in a good way. I think no one would have wanted any chaos in terms of सदर ने समरी रोक ली या कुछ और हो गया. But I think the biggest takeaway for me in all of this was कि ये जो even as late as last year, right, December 2021, Jan 22 तक कुछ इंसाफियन दोस्त जो एटलीस्ट मेरे थे, आई डोंट नो अबाउट यू, कि जी हम अभी भी 5 साल और 10 साल का पूरा एक मंसूबा था, जनरल फैज आएंगे और पीटीआई जो है वो हुक्मरानी करेगी इस मुल्क के ऊपर बड़े आराम से. आई थिंक इस हफ्ते ने वो पूरा जो प्रोजेक्ट खान जो था 10 ईयर का जो प्लान था, आई थिंक दैट इज फाइनली कल्मिनेटेड एंड हैज ब्लोन अप. इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई के चांसेस नहीं. ऑफ कोर्स खान साहब स्टिल इन माय व्यू इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन जो स्टेटेड गोल था सिक्योर करने का पावर किस तरह से, आई थिंक दैट ऑल एंडेड दिस वीक. And then the early retirements, including the early retirement of General Faiz, basically means कि जो उनकी जो at least leadership के अंदर जो क्या कहते हैं एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर था पीटीआई का, आई थिंक फॉर नाउ एटलीस्ट वो ख़त्म हो गया. अगेन फ्रॉम पाकिस्तानी हिस्ट्री हमें मालूम है कि दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बनने में जो है वो देर नहीं लगती. तो देखते हैं आगे क्या होता है. बट आई थिंक दैट वाज द बिग स्टोरी इन द सेंस के खान साहब का मार्च, नए चीफ की तैनाती, उस पर उनकी जो अनाउंसमेंट का सरप्राइज एंडेड अप बीइंग कि वो लोग सोशल मीडिया पे भी मजाक उड़ा रहे हैं कि आए थे हुकूमत गिराने इस्लामाबाद की, चले गए अपनी खुद 2 हुकूमतें गिरा के. वुड लव योर थॉट्स ऑन दिस. बट आई थिंक ये जो है एक बेसिकली मार्क्स न्यू बिगिनिंग इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स. in the larger scheme of things it still remains the same, but it is a new chapter, so to speak. It is a new chapter, obviously. नए चीफ आते हैं, उनकी तरजीहात कुछ और होती है, जो इस्तीफों से भी जाहिर होता है कि within the institution as well. I call it a cleansing of sorts, because जाहिर है, and this is not something that is unremarkable for any workplace. आप जब भी नए बॉस आते हैं, नया एंकर आता है, तो अपनी टीम या तो लेकर जाता है या नई टीम जो है साथ आती है और या हायर होते हैं. So obviously, given obviously there's reportedly, and I won't say that I have got confirmed reports of this, lots of credible reporters have been called saying that General Faiz, for instance, does not get along with General Asim Munir. हालांकि आपको ये भी मालूम है कि
जब आईएसआई के चीफ थे जनरल आसिफ, तो उस वक्त जनरल फैज उनके नीचे काम भी कर चुके हैं. बट जस्ट मूविंग ऑन, आई थिंक it is significant. I think this has been the most significant political development, and I will constantly say it is a political development that we had all been waiting for. उज़ैर, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि बाजवा साहब लगता नहीं है कि वो एक्सटेंशन ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों को अभी जब तक फॉर्मल सिग्नेचर नहीं हो चुका था सदर आरिफ अलवी का, यकीन नहीं था कि बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे. फिर दूसरा जो समरी में भी खेल हुआ था, ये भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं, मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ, चाहे असद अली तूर हो, चाहे मुजम्मिल सुहरावर्दी हो, या दीगर हैं बहुत सारे. उनको भी उनके पास ये खबरें थी कि जनरल आसिफ मुनीर पे भी काफी मनूवरिंग करवाई गई थी, जिस वजह से जो समरी का आना जाना हमने देखा था, जो मुख्तलिफ वुज़रा थे वो फिर पब्लिक में आके स्टेटमेंट्स कर रहे थे, ये तो हक है वजीर आजम का, वजीर आजम प्रबली भी कह सकते हैं. ये एक इशारा था कि जिसका नाम हम चाह रहे हैं उनका नाम होना चाहिए. सो that chapter ends, but that chapter ends after at least a year of speculation, at least of conversation, at least of instability, who will be the next army chief. So that chapter is closed and it's done. और जाहिर है बहुत सारी यूलॉजीज भी होती हैं नए इनकमिंग आर्मी चीफ के बारे में, वो भी हम शायद आप बात करें, मेरे ख्याल में सब ने कर ली है बहुत ज्यादा. बट खान साहब का जो लॉन्ग मार्च का जो इख्तिताम था, मेरे ख्याल में कि अहदाफ जो खान साहब के थे स्टेटस बिफोर ही स्टेप्ड, ही बिगैन दिस प्रोसेस, और हम 26 मई का भी बात कर सकते हैं, इससे कबल जो लॉन्ग मार्च किया था, जल्द इंतखाबात, उसके बाद आर्मी चीफ की तैनाती पर उनका असर और रसूख. ही थॉट ही वाज कन्विंस्ड के एंड ही ऑब्वियसली मेड दैट स्टेटमेंट एज वेल. उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बात की थी कि जनरल बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन की एक पेशकश भी की थी, तौसीह देनी थी, लाइफ और टाइम उनका एक्सटेंशन. मकसद ये था. हाँ, well, I mean that's the speculation, but लाइफ टाइम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, 3 साल की भी कह सकते हैं, until इमरान खान comes and appoints his own chief, उसकी भी बात कर सकते हैं. But that is coming from that side. But Imran Khan also confirmed that he offered it. Again, Saki, early elections ho, and Imran Khan gets his chief of choice. So that was one. Imran Khan did not get the early elections he wanted. तो दरमियान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पे भी इन्होंने काफी गलगार किया था. कोशिश यही थी कि उनको हटाया जाए ताकि नए इंतखाबात या जल्द इंतखाबात हो तो अपने मर्जी का उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो. वो भी नहीं मिला. तो इस लिहाज से जो आपने जैसे कहा, स्टेटेड गोल्स जो थे वो तो नजर नहीं आए उनके पूरे फुलफिल होते हुए. बट आई डू थिंक दिस इज प्लान बी. दैट डजंट मीन ही इज गिवन अप. कुछ लोग जाहिर मजाक भी उड़ा रहे हैं, खुदा पहाड़ निकला चूहा. मैं कहूंगी कि इट इज अ प्रेशर टैक्टिक, एंड इट एक्चुअली हिट्स एट अ कपल ऑफ वल्नरेबिलिटीज कि आपने सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसको जारी रखना है. क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने मुंह भी बहुत छोड़ा था. अपनी तकरीर में जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफों से माजरत असेंबलियों से निकल जाएंगे, रिजाइन कर जाएंगे. एक तरह से ये नहीं कहा कि तहलील कर देंगे. सो ऑब्वियसली देयर इज 2 डिफरेंट ways that you could do it. और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी हम पार्लिमानी कमेटियां हैं उनसे बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे. एंड देन ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोटिस्ड वेरी क्लियरली इमीडिएटली कि परवेज इलाही नहीं थे. महमूद खान स्टेज पे उनके साथ मौजूद थे, इमरान खान साहब के साथ, और मुनिस इलाही वो भी नहीं थे उस वक्त. हालांकि मुनिस इलाही ने एक फॉरेन ट्वीट जरूर डाल दिया था. जी बिल्कुल, वो ट्वीट डाला था, और उससे पहले ये भी इशारे आ रहे थे कि लाहौर में जरदारी साहब फिर जो है वो या सरगर्म है कोशिशों में. तो अगेन मे बी खान इज ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट. आई थिंक इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग नुआंसेस जो मैं चाहता हूँ ऑडियंस इस पे ड्रॉ करे, एंड आई हैव अ कपल ऑफ थॉट्स ऑन दिस एज वेल. पहला तो ये कि हमने आर्मी चीफ की तैनाती की बात की. ऑब्वियसली 2 रिपोर्टेडली अर्ली रिटायरमेंट्स, जनरल अब्बास और जनरल फैज जो हैं, हमने बात की, दे आर सीकिंग दैट. यूजुअली एटलीस्ट जिन लोगों से मैंने बात की है, ट्रेडिशन ये रहा है कि अगर आप जब 4th इन लाइन या 5th इन लाइन होते हैं और आप चीफ बन जाते हैं, तो जो सीनियर्स होते हैं सुपरसीडेड, वो ऑब्वियसली अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, बिकॉज दैट्स जस्ट द ट्रेडिशन. यू डोंट वांट टू बी kind of in a hierarchical system, a senior reporting to a junior who's now your chief.
In this instance, the most senior general became the chief of army staff. तो the fact कि उसके juniors उसके साथ काम कर रहे हैं, वो early retirement ले रहे हैं, it's interesting. It's not anything major, but it's an interesting shift in terms of the fact कि उन्होंने early retirement seek की, and they're moving on so quickly within days, right? Basically, the report has come out. So we'll see how the new chief builds his own team, quote unquote. Obviously, उसके अंदर एक political element on top of the reported fallout between General Munir and Khan Saab when Khan Saab was Prime Minister and General Munir was DGISI. Is also कि आजकल जो DGC हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो जनरल मुनीर के करीब हैं. तो अगेन दिस होल पॉलिटिकल इशू जो DGC के ऊपर बना हुआ है वो अब किस तरफ जाएगा रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क. तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ का जो है एक तरह से एक न्यू एलिमेंट हम देखते हैं कि उसकी टोन किस तरफ शिफ्ट होती है. ऑब्वियसली कल की तकरीर में जलसे में शहबाज गिल ने भी बात की, आदम स्वाति ने भी बात की. आदम स्वाति एट द मोमेंट वे रिकॉर्डिंग दिस रिपोर्ट्स आर कमिंग इन, ही इज बीन अरेस्टेड अगेन. विल नो मोर कि उसका क्या चक्कर है. तो आई थिंक एक एलिमेंट ये है. दूसरा ये कि जो रेजिग्नेशंस का है उसके अंदर जो अगेन इट्स अ प्रेशर टैक्टिक. हामिद मीर कॉल्ड इट Khan's last card, but it's an important card. We should pay attention to resignations. No, I think no, it is. It is an important card. We is. can't, yeah. Yeah, and I think on that उसके अंदर भी I would love your thoughts on these two elements. कि एक तो ये कि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि रेजिग्नेशंस दे अगर हुई और फिर उसके ऊपर फोर्स किया गया इलेक्शन, तो इट कीप्स द PTI's narrative in the limelight. It keeps them, gives them the opportunity to consistently rally. Khan Saab hitting the street for election campaign, then winning, maybe even showing on the seats that they win that they still have the vote bank. It builds momentum, right, politically speaking. But on the flip side, उसका ये है कि अगर आप रिजाइन करते हैं और हुकूमत अड़ जाती है कि हम जो है कंटिन्यू करेंगे इन वट एवर वे शेप और फॉर्म इट माइट बी गवर्निंग पंजाब एंड KP, then you lose influence in the caretaker setup. And again would love your thoughts on that, because आप अगर पार्लियामान में नहीं है, प्रोविंशियल असेंबली में और फेडरल नेशनल असेंबली में, तो जो केयरटेकर गवर्नमेंट का जो सेटअप बनता है ऑपोजिशन लीडर के साथ इन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर एंड द ऑपोजिशन, you lose influence there. So how do you see the calibration here in terms of being in the new cycle, running the election campaign for another 8, 9, 10 months, and then losing influence on the parliamentary or decision-making process side? Okay, so as a pressure tactic, I think it's a good one. इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा, it hits on the vulnerability, the economic side as well, because continued political instability doesn't really help the economy at all. And I think it also is actually cheaper. It's a cheaper tactic than going to the streets, because आपको लोगों को जमा करना, mobilization करना, it costs money as well as time and effort. Khan Saab, obviously, we shouldn't forget, was also, he's just recovering as well. उनका कास्ट भी अभी उतरा था. उन्होंने कहा है कि 3 महीने आराम की डॉक्टर ने तजवीज़ दी है उनको. Exactly. So I think, in that sense, it's cheaper, less trading. It keeps you in the news cycle and also builds pressure. Without and falling short of actually resigning, and I think that's pretty key, and everybody understands that this, as far as I see it, also is a negotiating tactic. It can potentially also draw out, or at least test the army's so-called neutrality or being apolitical as well. Because as we know, Parveen Zilahi, Chief Minister Punjab, where Imran Khan has a proxy government, was something that he has managed to get out of the last 7 months, is elections, winning elections, and obviously getting some measure of control over Punjab. उनके FIR ना दर्ज होना कातिलाना हमला के बाद उससे जाहिर होता है कि it is what it is. It is a proxy government, and Parveen Zilahi being close to the establishment is obviously an indication. So it will draw them out. To your second point, I think, which is caretaker setup. देखिए, खान साहब अगर इलेक्शन हार जाते हैं, इलेक्शन अगले साल फर्ज करें हो जाए, चलिए जल्दी भी हो जाए, अगस्त में हो जाए, फौरन हो जाए, बिफोर द टर्म ऑफ द असेंबलीज, अक्टूबर में हो जाए, जब असेंबलीज की मुद्दत पूरी हो जाती है, तो अगर हार जाते हैं खान साहब, तो खान साहब ये कह सकते हैं कि ये इसलिए क्योंकि जो caretaker थी, उसने, he could give it any excuse. Khan Saab does not respect parliamentary norms or traditions. It doesn't really matter to him. So we have to remember that even with whether it was the 2013 elections, just May Zahir, who didn't have stakes
in which he claimed rigging. He used it. He accused a lot of people, including the then caretaker prime minister as well. So I'm not sure that it really matters to Khan Saab, honestly, or it matters to anybody who follows PTI के caretaker का say था या नहीं था, army chief का say था या नहीं था, that matters to Khan Saab. या एंड आई थिंक केयरटेकर स्पेशली अगर आपका अपना एस्टिमेट जो है पीटीआई के कुछ सोशल मीडिया के लोग और बाकी लोग कल ये भी ट्वीट कर रहे थे कि हम 3/4 मेजोरिटी लेके आएंगे, तो मैंने कहा 100% ही कर दो यार, 3/4 की क्या जरूरत है। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट अगर आप हैं तो फिर सही है, केयरटेकर से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू थिंक के आवाम की जो राय है वो आपके फेवर में है। एंड अगेन एज यू सेड, अगर आप उस पर फिर परफॉर्मेंस जो है वो, और अगर 2/3 या 3/4 या जो भी है उससे कम होगा तो वो तो रिगिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली तो वो कन्वीनियंट जो है एक स्ट्रेटजी बन जाती है कि आपकी आपने उसके साथ क्या करना है। एक और चीज अंबर खान साहब ने कल जो दो चीजें अगेन आई विल ऐड जो उन्होंने कही या एक ना कही एक कही, एंड आई वुड लव योर थॉट्स ऑन दिस एज वेल। एक पूरा मई से वो जो कैंपेन चली उसके अंदर उन्होंने मीर सादिक, मीर जाफर, गद्दारी के फतवे बांटे, काफी सारी बातें की। और हम फिर एक हफ्ते या कुछ दिनों पहले देखते हैं कि फैक्ट फोकस की पूरी एक रिपोर्ट आती है अहमद नूरानी की। वन वुड इमेजिन, एटलीस्ट आई वुड इमेजिन कि खान साहब जहां उन्होंने रेटरिक वो ले चुके थे, ये लाइटनिंग रॉड है उनके लिए कि वो करप्शन नैरेटिव और इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो कंबाइन करके जो है एक नया हथियार वो अपनी तकरीर में लेके आए, लेकिन वो नहीं लेके आए। वुड लव योर थॉट्स ऑन दिस एज वेल बिकॉज आई फाउंड दैट इंटरेस्टिंग। और फिर ये एक नया बयानिया कि नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है बेहतर ताल्लुकात, तो ये क्या पुरानी इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने टारगेट उस तरह नहीं किया जिस तरह करते आए हैं? व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इफ एनी इन योर व्यू? एंड देन ऑब्वियसली नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ऑब्वियसली वो स्टार्ट जो है इनिंग्स बाउंसर से नहीं करना चाहते, थोड़ी टुक टुक करके आगे खेलना चाहते हैं। How do you see that proceeding given the change of tone we saw last night as well? Yes, I mean this was an opportunity for Khan साहब। देखिए बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे, it is done and dusted. This was an opportunity because he did mention, for instance, अगर हम करप्शन की बात करें कि उनकी करप्शन को टॉलरेट किया, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं चाहता था कि उन केसेस के साथ आगे बढ़ूं, लेकिन उनको केसेस को बंद के अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। अहमद दुरानी की जो स्टोरी थी, आई थिंक this was a great opportunity for Khan if he really wanted to talk about corruption and hit out of the establishment. And it's always the misses that you look at. हमने जैसे सबने फौरन नोटिस किया था कि परवेज इलाही और मुनीर इलाही नहीं थे स्टेज पे, कोई तकरीर भी नहीं हुई। ये भी मुझे लगता है कि मिस है। बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं, रिटायर्ड आर्मी चीफ्स को हदफ बनाना is actually very much easier, isn't it? You would think. And you had opportunity because where Khan Saab, obviously he always has he had the numbers, he had a story, he really could have used it, but he didn't. And I think that is also, again, it's that negotiating tactics मुझे लगता है कि फिलहाल वो हल्का हाथ ही रख रहे हैं। उनको पता है कि बाजवा साहब कहीं गए नहीं हैं, 29 तो हुई नहीं है जिस दिन जाहिर है उनकी एक्चुअल रिटायरमेंट भी है। मे बी यूज इट आफ्टरवर्ड्स। आई नो कि आजम सवाती ने काफी खुल के बात करते रहे हैं और करी की है, और उनका शायद उनको दोबारा से गिरफ्तारी भी हो चुकी है, बट खान साहब हैज नॉट। एंड अगेन आई थिंक दैट इज द प्रेशर टैक्टिक कि मैं फिर खतरनाक हो सकता हूँ, आई सपोज इट्स द मैसेज। बट at the end of the day, Khan Saab uses corruption when it is convenient to him. Just as a matter of अब देखिए नैब ने अभी मलिक रियाज को नोटिस भी भेजा है on that money that शहजाद अकबर negotiated on behalf of the government of Pakistan. और मैंने 2018 में एक अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री की थी, और उसपे 2-3 चीजों पे खान साहब की कारकर्दगी के हवाले से मेरे लिए एटलीस्ट जाती तौर पर एक टेस्ट ये था कि वो मलिक रियाज को किस तरह डील करेंगे। and that to me would indicate his seriousness about corruption, about mafias. And Khan साहब ने real against land mafias बाद में जब 3 एमनेस्टी स्कीम्स दे दी थी, और एक दफा वो के भी कह चुके हैं कि ठीक है फरा गोगी या फरा शहजादी या जो भी उनका नाम है, उन्होंने बेनिफिट तो किया है, लेकिन सबने किया था, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया था रियल एस्टेट में, तो दैट्स अ गुड थिंग ही थॉट। and he's changed his tune on that now. So to me I think Khan साहब
in terms of the establishment has really not escalated. And that tells you that he still wants to keep that space open with the new establishment. नई establishment के साथ ताल्लुकात ऐसा नहीं है कि वो खराब रखना चाहते। उन्होंने बज़ाहिर दिखाया, जाहिर तो किया कि मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ in the army chief appointment with getting the president to take the prime minister's plane to meet him, to एक तरह से consult, मुशावरत, एक अलामती मुशावरत करने का हमने एक visual तो देखा, but I think he still, that message is that, I can make things more difficult, but I'm not going to. Yeah, so let's talk a bit about the other side of Khan. So PDM or Sharif Bradran in particular, they've picked another chief once more. Let's see how this one turns out in terms of the relationship. But how do you see the situation for the PDM and the Sharif government in particular and the PMLN? To me, from the outside, लगता है कि बड़े खुश, comfortable, कॉन्फिडेंट आफ्टर 6-7 महीने की जो है वॉलेटिलिटी के बाद एक तरह से मुस्करा भी बढ़ा रहे थे टर्की के अंदर। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम जो है, उनकी 1-2 क्लिप्स मैंने देखी, तो वो टर्की भी गए हुए हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल फ्रंट पे जो उनका हदफ था कि इस अपॉइंटमेंट को, बाजवा साहब की रिटायरमेंट को सही तरह हैंडल करके लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट, वो अकॉम्प्लिश हो गया। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन where the PDM stands now and politically what are they looking at achieving? देखिए, पीटीएम का मेरे ख्याल में एक जो बहुत बातचीत हो रही है, अयाज सादिक जो अब इस वक्त वजीर कानून भी हैं, फॉर्मर स्पीकर भी हैं, और उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की है जो नई नहीं है, लेकिन इस मोड़ पे, इस नाजुक मोड़ पे बहुत मेरे ख्याल में दिलचस्प भी है कि ये भी हो सकता है, ये भी आपको कानून और आइन में एक ऑप्शन मिलता है कि अगर मुआशी हालात अच्छे नहीं हो, किसी किस्म की इमरजेंसी हो, तो आप हुकूमत का टेन्योर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो पोटेंशियली लुकिंग एट 24 एक्चुअली। यस, आई डू एग्री। आई थिंक एक दफा ये तैनाती हुई और जैसे मैंने कहा कि आसान नहीं थी। जो वो चाह रहे थे वो इतनी आसानी से उनको हासिल नहीं हुआ था। जरदारी साहब पंजाब तो चले गए, लेकिन जरदारी साहब इससे पहले इस्लामाबाद में भी F8 में भी बैठे हुए थे, तब भी मुलाकातें कर रहे थे, तब भी कभी नवाज शरीफ साहब से बात कर रहे थे, कभी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे थे, बात कर रहे थे, और भी मेरे ख्याल में जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही थी। सो एट द मोमेंट they've crossed one bridge, which is the army chief's appointment, but that doesn't mean that they can rest easy. जो political instability है वो तो जाहिर है जारी रहेगी। खान साहब का जो ऐलान है इस्तीफा देने का, तहलील करने का, और उससे भी that will keep them on their toes. So I think it isn't going to be that easy. And then we have to see कि इस वक्त भी inflation जो है वो काबू नहीं पा सकी। इसके बावजूद कि सागटार साहब, नवाज शरीफ साहब, उनका ये बार बार कहना था कि लोगों को रिलीफ दें, इन्फ्लेशन पर काबू पाने की बहुत जरूरत है। आई थिंक वी सॉ सम ऑफ द हाईएस्ट फिगर्स कमिंग आउट दिस वीक, द वीकली sort of inflation rate. So all is not that comfortable for the PDM government. वो खींच तो लेंगे शायद जो मुद्दत है, but I don't think that they still have some political ground to cover, just in terms of recovery, as well as dealing with Imran Khan. या आई थिंक एक जरदारी सब पे भारी एक बार फिर जो है हमने देखा कि वो शहबाज शरीफ से मिले, और इंटरेस्टिंग थिंग अगेन वो जो पूरा इन्होंने प्रोसेस रन किया, पहले आर्मी एक्ट पे तरामीम की लीक और उसके बारे में बातें, जो डॉन की स्टोरी थी उस पर चली बात, और फिर जरदारी साहब आपने ऐसे कहा लाहौर, फिर इस्लामाबाद, शहबाज शरीफ से मीटिंग, फिर कोalition पार्टनर्स की मीटिंग, और कोalition की पार्टनर्स की मीटिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग एटलीस्ट मुझे इसलिए लगी कि वो मुलाकात होती है, सब आके बैठते हैं, सब जो है reimpose their faith in the prime minister and his authority and his choice and his mandate to select the army chief, लेकिन वजीर आजम साहब मशवरा सबसे करते हैं नाम बताए बगैर, और ये बताए बगैर कि वो कल आ जाना सुबह, कल नाम पे बात भी हो जाएगी, और कल सुबह जो है वो तरामीम जो हमने लीगल करनी है वो भी हम उसी वक्त कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब इट्स लाइक आपने सबने हाँ कर दी, मिठाई भी खा ली, लेकिन पता नहीं है कि मिठाई खा किस बारे में रहे हैं, बस ये है कि ठीक है आप हौसला कर लें।
तो वो भी एक अजीब सा कंसेंसस उन्होंने फॉर्म किया था. ऑब्वियसली व्हेन Mm. द डे बिफोर, अ कपल ऑफ डेज बिफोर, द प्राइम मिनिस्टर हैड मेट आसिफ अली जरदारी, तो ऑब्वियसली वहां वो बात हो चुकी थी. और आई फाउंड इट आल्सो इंटरेस्टिंग, वो फ्रॉम अ विजुअल पर्सपेक्टिव, कि जब वो अंदर आ रहे थे तो उनके बैकग्राउंड में एक साइन था, नो सेल फोन्स बियॉन्ड दिस. तो आई थिंक वो के बाद जो है वो उन्होंने थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया है प्रोसेस में, कि जी क्या कहाँ फोन जा सकता है और कहाँ नहीं. आई डोंट थिंक दैट रियली Yeah, मैटर्ड. if you remember, leaks भी हुई थी, so it's not like none of them, they've all been in power. They know कि leaks भी हो सकती हैं, recordings भी होती है. Exactly, and I think at least from my old experience, I know कि बिलावल हाउस में तो पूरा एक स्किफ है जहाँ मतलब कोई फोन शोन नहीं जाता, असल मीटिंग्स वहाँ होती है. जरदारी साहब always has been more careful in Hmm. understanding how these things work. But I think yes, you're right कि शरीफ खानदान जो है वो यूरोप में छुट्टियां मना रहा है हॉलीडे सीजन से पहले. आई थिंक लास्ट पिक्चर आई सॉ मिलान में या कहीं थे इटली के अंदर. So while they're enjoying, yes, the younger brother and Rana Sanaullah and others are facing the heat and will continue to face the heat. And I think inflation was a big one Hmm. this week, and the state bank's decision on that as well. I at least my view on this is that it was very concerning, and I think Dar Saab ki bhi jo recent जो comments आ रहे हैं वो यही suggest कर रहे हैं कि maybe his software has also updated with $200 रुपए और $200 वाली जो बात थी वो अब नहीं होती इतनी, क्योंकि आई थिंक उनको भी ख्याल आ गया है कि इतना आसान नहीं है आंखों में आंखें देख के आईएमएफ से डील करना. Well, I mean, डार साहब ने मेरे ख्याल में एक जूम मीटिंग तो जरूर की है, लेकिन अभी हतमी तौर पर आईएमएफ के साथ शायद मुलाकात नहीं. बट आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज स्टेट बैंक raising the interest rate. So your take on that, because I think there are a lot of things that are concerning for everyone at this point. सबसे पहले अगर आप reserves देखें, वो there's no hope on that front at the moment. अगर आप inflation, जैसे मैंने कहा, it's really ridiculous. I mean, it's incredibly difficult, and I don't see how they're going to manage if they haven't managed so far. There's also been a real issue with in terms of letters of credit, oil imports, and the money to buy more money to buy oil. So I think that's also been a problem. So just tell me what's happening. We're all really worried here. Yeah, I mean, so look, anecdotally, right? Like, this, you're on the ground. I have friends and family there. Everybody complains about prices going up every day. हर दिन जो Mm-hmm. है कुछ ना कुछ महंगा हो जाता है. और ये anecdotally सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं. इस पे स्टेट बैंक का डेटा भी सजेस्ट कर रहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर जा रही है. इवन कोर इन्फ्लेशन जो मेजर होता है, एक तो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, द ब्रॉड मेजर, कोर टेक्स Mm-hmm. आउट एनर्जी एंड फूड, वो भी ऊपर जा रहा था. तो कंसर्न तो था, लेकिन स्टेट बैंक कुछ महीनों से उसने पॉज रखा हुआ था रेट्स हाइक पे. और वो ये बात दिलासा लोगों को दे रहे थे कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन पीक कर रहा है, एक्सटर्नल शॉक्स हैं, उनके अलावा जो है इतनी घबराने वाली बात नहीं है. तो इस हफ्ते जब स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक करना, तो उसके बाद वो एक एनालिस्ट ब्रीफिंग रखते हैं, which Okay. I attend. And usually it's like 7 a.m. my time. I'm sitting here in DC. ठीक है, तो इस दिन मैं उठा, मैंने कंसेंसस था ब्रॉडली कि स्टेट बैंक जो है वो वही करेगा, रेट पॉज रखेगा, राइट? दैट वाज द Mm-hmm. मेजॉरिटी कंसेंसस. सो I woke up in the morning, 100 basis points increase. Okay, interesting start to the day. Tune into the Zoom, kind of sleepy, coffee नहीं पी है, सुन रहे हैं. Or then I just woke up suddenly because the tone was very different from the bank, in the sense that the bank कह रहा है, again we can then parse through and have a conversation about whether the bank is saying what it really means, or is this just they decided that this is a convenient story to tell, which Khurram Hussain and Ariba Shahid and others believe that there's more to it. But anyways, the bank is saying कि inflation, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है, और क्योंकि लोगों की तनख्वाह बढ़ने का प्रेशर आ रहा है मईशत के अंदर, 20% वेज प्राइस इंक्रीज आ रही है. तो वो उससे जो है वेज प्राइस स्पाइरल का फियर, दे टॉक अबाउट दिस, which for those of the folks that don't really follow economics, the analogy for this is that you could be Superman as an economy, but if you're facing a wage price spiral, that's like kryptonite.
You could be as strong as you can be, but once this wage price spiral sets in, inflation expectations get de-anchored, meaning कि लोग अब expect करते हैं कि महंगाई होगी तो वो तनख्वाह बढ़ाने की और कोशिश करते हैं, लेकिन अब जैसे ही तनख्वाह ज्यादा बढ़ती है मईशत के अंदर तो महंगाई और बढ़ती है, क्योंकि अब पैसे ज्यादा आ गए लोगों की जेब में, राइट? So it feeds on itself. It becomes a firestorm. To me, that was the most concerning part. Because the shift in tone, with that, 100 basis points is not high enough. Of course, social media पे there is still an old school thinking कि पाकिस्तान में interest rate से महंगाई काबू में नहीं आती वगैरह वगैरह. तो वो कह रहे हैं कि इसका कुछ फायदा नहीं है, which again we can debate. But broadly speaking, the state bank has unveiled an inflationary nuclear bomb going off in Pakistan's economy, and this is going to be very, very dangerous. Now, Khurram and others, and we can talk about this, think the bigger story is the external sector, lack of dollars, LCs वगैरह, और IMF ने कहा है कि आपने rates बढ़ानी है to get the review back on track. But if we take the state bank at its word, they basically unveiled an inflationary nuke in the economy. So could you just explain this? Because how does the interest rate impact the economy? You'll have to dumb it down for the rest of us जिनको मईशत के बारे में कुछ खास नहीं पता. हमें बस ये पता है कि हमारे बिल में इजाफा होता है. तो देखें, शुरुआत इस बात से करते हैं कि इफ वी स्टार्ट मेजरिंग इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह 2019 से हम अगर शुरू करें, जनवरी से, तो पाकिस्तान में तकरीबन महंगाई की शरह जो है वो 65% रही है सिंस देन. बांग्लादेश और इंडिया में रफली स्पीकिंग 25% रही है. तो वी आर मोर देन 2 times द रेट ऑफ इन्फ्लेशन देन आवर नेबर्स, बेसिकली द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया एंड बांग्लादेश. श्रीलंका और को साइड पे रख दें अभी. नाउ इंटरेस्ट रेट्स का जो कनेक्शन है वो टिपिकली ये होता है कि इंटरेस्ट रेट्स आर बेसिकली द कॉस्ट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी. तो इंटरेस्ट रेट्स कम होती है, पैसा हासिल करना सस्ता हो जाता है, which means there's more money to spend, more money to go around, more money to import things, more money for the government to spend on PSDP, for example, etc. Right? So aggregate demand in the economy goes up when money is cheap. Yani ke you can spend money for investment, for consumer goods, consumption, government expenditures, etc. When you increase the rate of interest in an economy like Pakistan, where the government is the largest borrower, it imposes a higher cost of borrowing onto the government, which means कि सरकार के पास बाकी चीज़ों पे खर्चा करने के लिए पैसे कम रह जाते हैं. क्योंकि लोग कहते हैं, for example, I see this figure going around कि every 1% increase in the policy rate translates into roughly 300 billion rupees of additional interest expenditure to the state. तो अब इमेजिन करें 600 कुछ अरब रुपए का पीएसडीपी बजट है और 300 अरब आपने एक्सपेंसिव कर दिया इंटरेस्ट रेट, राइट? सो समवेयर यू हैव टू कट स्पेंडिंग टू पे द एडिशनल इंटरेस्ट दैट विल नाउ बी ड्यू. तो एग्रीगेट डिमांड उससे कम हो जाती है. द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान बेसिकली इज के हायर इंटरेस्ट रेट्स विल ऑब्वियसली ट्रांसलेट इनटू lower economic activity, which translates into obviously lower क्योंकि बिजनेस imports. जो है वो जाहिर है उनको बोरो नहीं कर सकेंगे, मतलब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. Exactly. So आपका ये कहने इसका ये मतलब है कि essentially you're putting a brake on the economy. Correct, which is already suffering. So and the crazier part of this is again historically ये जो टाइटनिंग साइकिल होती है पाकिस्तान की मईशत में या किसी भी हुकूमत दुनिया में, वो अगर आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो आप इलेक्शन के फौरन बाद ऑस्टेरिटी इंपोज करते हैं, जैसे खान साहब ने की, या उससे पहले 2013 के इलेक्शंस के बाद हुई, और फिर रन अप टू इलेक्शन में आप खर्चे करते हैं ताकि आवाम खुश हो, आप कह सकें हमने ये मंसूबा लगाया फलाना वगैरह वगैरह. ये पहली दफा है इन रीसेंट मेमोरी दैट आई नो ऑफ इन पाकिस्तान जहां आउटगोइंग हुकूमत इलेक्शन से पहले ऑस्टेरिटी इंपोज करेगी, विच मीन्स कि महंगाई बढ़ेगी, प्राइसेस एडजस्ट करेंगी ऊपर की तरफ, बिजली के बिल बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे, मईशत का स्लो डाउन होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, और उस माहौल में आपने इलेक्शन पे जाना है. तो ये एक अजीब सा जो है पीडीएम के लिए एक मसला बन चुका है ये पूरा. नहीं, लेकिन आप ये भी भूल रहे हैं कि इस वक्त अगर हम देख लें कि अगर वो लास्ट करते हैं तो भी अगला बजट तो है, एनएफई की मुद्दत पूरी करते हैं तो अक्टूबर तक तो चल सकती है बात. नहीं नहीं अभी भी चल टाइम सकती है.
अभी नहीं, टाइम है उनके पास, कहने का मकसद ये है। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके पास हाँ। टाइम है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन इस वक्त अभी तो फिलहाल मिनी बजट की जरूरत है, और फिर अगर उसके बाद वो रिलीफ वाला बजट किसी तरह जादू से दे देते हैं, तो हम्म। शायद थोड़ा सा मोमेंटम बने. बट आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 6 months they will have to impose more pain on ordinary citizens and households. बिजनेसेस वोंट बी हैप्पी इधर, जो जो आपकी जो हम्म। इलीट इंडस्ट्रियल लॉबी है वो भी खुश नहीं होगी. और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मार्केट्स हैं, यूरोप और अमेरिका, जहाँ एक्सपोर्ट जाते हैं, वहाँ हम्म। भी रिसेशन का माहौल बन चुका है, राइट? तो एक्सपोर्ट्स भी आपके कम हो रहे हैं. तो इट वोंट बी एन ईजी राइड, एंड आई थिंक it is only going to get a whole lot worse, not only for ordinary citizens, unfortunately, but for this PDM government, because a lot more pain is हम्म। around the corner. Which essentially means that this makes it easier for Khan actually. Free and fair election हो, and we know के असर तो होता है, कारकर्दगी usually तो नहीं होती, मैं कहूँगी it's a factor, लेकिन at least to an extent there is a perception, और मेरे ख्याल में कि अगले साल तक तो ये भी नहीं कह सकते ये खान साहब की वजह से है, अब भी नहीं कह सकते क्योंकि 6 माह गुजर गए, आपको इतना ही ग्रेस पीरियड मिलता है in an election. And I think so this is essentially very difficult for them to win an election. So I think this is the cross that they have to bear, but the political cost that they had, उन्होंने जो अभी तक जो उनको पे करनी पड़ी थी, this essentially means that what does it, and here's a question, what if they do come back, or what if Khan comes back? They would also, the next incoming government, whichever it may be, would also have to pay the price of this. Absolutely, and I think the costs are only going to go up. And politically, if you're making a political choice as PDM, your goal will be to kick the can down the road. Now, whoever wins after that will have to deal with the crisis, much like 2018, ना कि वो crisis को आगे election के बाद देखी जाएगी, तो फिर PTI को inherit करना पड़ा problem. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम कहीं नहीं जाना, ये Well, फंडामेंटल inherit तो सभी करते हैं, सभी कुछ to करते some हैं. degree or करते हैं, to some degree or the other, and that is why we keep going back to the IMF. All right, so I think let's I want to put an end to this depressing note by moving on to winners and losers, and I'm going to start with you because my winner is political. माय विनर ऑफ कोर्स द वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, और काफी जबरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है. पहले दिन 2 दिन लग रहा था कोई अपसेट्स नहीं होने, लेकिन फिर एक हो गया. सो माय विनर इज सऊदी अरेबिया. They beat Argentina. They're playing really good football. They've got a vibe about them as a team that is exciting and interesting to watch. And I think, again, like seeing an underdog beat somebody as big as Argentina, which then won their second game as well, and Saudi lost their second game, is exciting. So to me, the winner is Saudi Arabia and the World Cup this time around. Well, I mean, एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया था, आम तातील जो है, so celebrations in Saudi Arabia even though they didn't win, but I think it's मैं तो also ये भी कह रहा as था मैं तो ये भी कह रहा था कि शहबाज शरीफ को एमबीएस को फोन करना चाहिए था, उसके फौरन बाद वो खुश मूड में होते, कहते यार सुनो तुसी मुबारक हो, उनको रोल्स रॉयस दे रहे हो तो इधर भी जरा जो है 500 मिलियन, $1 अरब जो है वो इधर टर्की को 5 अरब दे रहे हो, तो यहाँ 1 अरब भेज दो, जीत गए हो मैच यार. जीत गए हो, हमारी दुआएं हैं, हम तो बहुत दुआ करते हैं, हम तो ये हाँ, भी कहते हैं कि हम 23 करोड़ अवाम ने दुआ किया आपके लिए. बिल्कुल. So yes, that was an opportunity. I think winner of the week, and I think this is an interesting one, which is Faisal Wada, because he has escaped lifetime disqualification. और इसको जाहिर है दोहरा मयार भी कहा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल वाज़े तौर पर फैसल वाडा ने एतराफ भी किया था कि उनकी जो सबमिशन की थी at the time of an election papers, he was holding an American passport, which he was not meant to, and he lied about it. Let's be clear about that. He didn't just submit the wrong papers. It wasn't just like, oops, ghalti ho gayi, mistake ho gayi. He deliberately did it. He escaped accountability, and he resigned from his MNA seat, got a Senate seat, because he saw the disqualification coming. But anyway, so he's a winner. He's a winner इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ खान साहब पे कुछ बम गिराने की कोशिश भी की, some that have hit, some that have not, and he's kept his, I would say, his relationship with the military establishment intact.
He does not need politics as such. He claims that he is still a lot of respect for Khan. At the same time, I think it's also very interesting because एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या इसका मतलब है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो ताहयात नाअहली है उस वहां भी कुछ खत्म होने के चांसेस हैं या नहीं है टेक्निकलिटी पे लेट्स हैव टू सी बिकॉज फैसल आर्डा apologized. That was the condition, which is also an admission of guilt. And I think it's kind of, if I was to talk about it, I would say if you look at two other recent careers, I think globally, agar Lula ki baat kare in Brazil, and we talk about Anwar Ibrahim in Malaysia, Lula pay corruption charges, those were annulled by the Supreme Court in Brazil on a technicality. Won an election by a whisker. It's obviously being challenged, but he's made a comeback. Anwar Ibrahim has also made a comeback, and again, I think this is also Mahathir Mohamad is a big favorite of Imran Khan. वो हार गए इलेक्शन, अपनी कुर्सी भी हार गए. वो अपने कुर्सी भी हार गए और जो अनवर इब्राहिम पर corruption and sodomy charges थी that that is something that he's also made a comeback. But I still remember, and I spoke to Imran Khan a few years ago, and I asked him about that. Don't you think Mahathir was targeting Anwar Ibrahim as a rival? And Imran Khan brushed it aside as well, which also tells you as his sort of icon and hero doesn't see that as a problem. But anyway, so those are comebacks. Will Nawaz Sharif make a comeback? I think that's another question. I think फैसल वाडा की नाअहली के बाद ये दोबारा से सवाल उठ रहा है. नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली जो अपनी यूरोप यात्रा से वापस आएंगे क्या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे पाकिस्तान भी वापस आएंगे? ख्वाजा आसिफ is hinting at it, but again I think it depends on where Punjab goes. So my winner. तो बेसिकली भारत में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, वहाँ उनकी दाढ़ी भी उग गई है और उनको बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हो. उस पर भी अप्रोर हुआ था. लेकिन शरीफ खानदान जो है वो यूरोप यात्रा पे निकला हुआ है. पाकिस्तान वो कब आएगा ये नहीं पता. सर्द मौसम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं यूरोप के अंदर. नहीं, और हमारे जो अपोजिशन लीडर उनका यात्रा तो कल ही उन्होंने इसके खात्मे का ऐलान कर दिया था, तो उनका तो खात्मा हो गया. बट आई थिंक या और जिस तरह जो है वो सऊदी अरब की जीत ने छोटी टीमों के हौसले बुलंद कर दिए, इस तरह फैसल वावडा की जीत ने जो है शरीफ खानदान के हौसले बुलंद कर दिए. आप ये बेसिकली कह रही हैं कि वावडा की जीत में नवाज शरीफ की शायद जीत की ओपनिंग मौजूद है. मरियम नवाज का भी केस जो है वो भी खत्म हो गया, इसहाक डार का भी खत्म हो गया. तो मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी फतूहात हैं जो जिसे जाहिर है हौसला बुलंद तो हो रहा है. तो अंबर फिर एक ओपनिंग रह जाती है जिस पर अभी तक इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन वो सरगर्म आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गए हैं. उनका शख्सियत का नाम है अल्ताफ हुसैन. तो वो भी रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? के अल्ताफ, आर वी गोइंग टू सी द ग्रेट अल्ताफ मेक अ कमबैक बिफोर इलेक्शंस? I would rather see him remain a TikTok star. But yes, Well, I know that there is discussion about that. Local bodies elections of January में होने हैं in Sindh. And I think that is an opportunity for MQM to try and जो ये reunification की कोशिश हो रही है, बात हो रही है, वो आगे बढ़े. हो रही है कि करवाई जा रही है? करवाई जा रहा है, सुना तो यही है. तो फिर apolitical neutral, who knows? Exactly. So I think my loser for this week, on the same political note, is Imran Khan and the PTI. कि मई से उन्होंने जो पूरा एक कैंपेन चलाया, बल्कि इवन लास्ट ईयर या उससे पहले जो 10 साल के प्रोजेक्ट की बात हुई की जाती थी कि हम सिक्योर हैं, हम अपना चीफ लगाएंगे और फिर जो है देखो आगे आगे होता है क्या. तो वो पूरा जो स्टेटेड गोल था या प्लान था, it has not achieved its goals. This week was a big, a big loss for the PTI and Imran Khan. And again, they played a big card, probably maybe their last card, but a very important card nonetheless in terms of announcing the potential resignation from the assemblies. But Khan, in terms of General Munir becoming chief, General Faiz seeking early retirement, the influence that he was seeking in terms of the decision-making process not coming to bear, his agitation not leading to the stated goals that he had, and we talked about this at length. I think all of that makes him and his party a loser for this week. Now, that does not mean before the trolls start typing we're saying he's a loser or he's done. By no means he's done. It's just that in this current episode, what he was trying to achieve, his strategy has failed, and he has to recalibrate and adjust and course correct now.
Okay, so that is your loser of the week. I don't have a loser, but I do have another winner. And I think for me, it would be Pakistan at COP27, Sharm el-Sheikh में, Egypt में, because Pakistan की जो diplomacy थी, that really won out. Loss and damage in terms of holding powerful or developed countries accountable, or at least to pay for the damage that climate change causes or the reparations. You use various words. Loss and damage is the one that's being used now. I think Pakistan getting that on the agenda was a big deal. और ये भी बहुत मेहनत के साथ किया था. That the team negotiated, it went front and center. Shehbaz Sharif led. I think इस वक्त my winner would obviously be Climate Change Minister Sherry Rahman as well, and her team that were again front and center at these climate change negotiations. It actually put Pakistan on the diplomatic or climate change map. और मैं ये भी एतराफ करना चाहती हूँ कि इससे पहले इमरान खान as a prime minister spoke a lot about it. We can talk about how effective any of these solutions are, but that's a separate matter. Including an advisor to climate change, Malik Amin Aslam, who's also obviously very active as well. Acknowledgement on some of their projects, but I think in this case, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी वन आउट इसलिए क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि लॉस एंड डैमेज वुड बी इंक्लूडेड लास्ट मिनट. It took a long time. The settlement was put out there, and I will say again कि उसके mechanisms haven't been worked out, and I think that's a weakness, which is कि obviously कि पैसा किसके will it be a World Bank type fund, for instance, and who's going to put money into it, and all of those things. But yet I think at least it put Pakistan on the climate diplomacy map, and I think that's a win. Yeah, I think that's a huge one, and I think it's the point you made about Khan and Malik Amin and others. Just thinking out loud on this, tell me what you think about this. But economy पे हम जब बात करते हैं, हम broadly बात करते हैं सियासत के ऊपर पाकिस्तान में, तो criticism बजा है, right? On one hand, you have Shaukat Tareen, on the other, you have Ishaq Dar, and People's Party side पे पता नहीं है कौन, right? So things like that. But well, I mean, Naveed Qamar was a finance minister briefly and is a commerce minister at the moment. Okay, yeah, so same faces. But on the climate side, across the two big parties or the three big parties, you have good talent. Malik Amin did good stuff. Khan took the lead on a lot of these things. Obviously, आप अगर domestic political issue को हटा दें with Ruda and other things, he had a good overall stance and a good set of people advising him on that. Shehbaz Sharif, you mentioned Sherry Rahman and her team. So I think on the climate side, Pakistan does have a lot of really good political talent. And it showed at COP27, and it's a good sign that there's continuity in that talent, in the sense that the government has changed, but the position and the role Pakistan is playing has grown, especially in light of the floods. I hope that continues. Obviously, there's a lot of details, and the devil is always in the details about what this means and what access to finance Pakistan gets, etc. But yes, for a country that has been globally, adrift essentially in the broader foreign policy game that is emerging, for Pakistan to play a role on this and be at the forefront, I think is a good development, and I think it should continue moving forward. Yes, and I will say that कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, so the loser of for me for the week, and maybe given what you just said, for the next many months is Pakistani Awam, because with all the power play that we talk about, summary army chief, Sadr ne dastakhat nahi kiya, ultimately what really matters is whether our lives improve. जहाँ तालीम जो आपके आइन में तमाम बच्चों को आपको मुफ्त में देनी होती है, उनको मिल रही है, वो मयारी तालीम है या नहीं, आपके पास साफ पीने का पानी है, आपके पास हेल्थ केयर तक रसाई है या नहीं है. These are things that matter. And unfortunately, with this political instability, the uncertainty of any government making it through to 5 years, चले हो भी जाता है 5 साल तक, लेकिन वजीर आज़म नहीं रहता. I think that political uncertainty, that mismanagement of the economy over the many years, that influence, that political interference by the military establishment. आपने प्रोजेक्ट इमरान की बात की, उसकी खात्मे की बात की. अल्टीमेटली लूजर तो पाकिस्तानी अवाम ही होती है ना, जहां हमें नहीं पता होता कि who's when the elections will be, who will come in, who orchestrated it, and whether our vote actually matters.
Yeah, and I think I've shared this stat before. I'll share it again. 1990, Pakistan's GDP per capita was higher than that of China. Today, China owns 30% of Pakistan's external debt. So just to put things in perspective in terms of how far the economy's come down. And on that note, again, Amber, good to have you and good to have this discussion on Nazuk more. Hope the audience, you guys tuning in, enjoyed it. If you liked it, subscribe, share, follow us on Twitter. And if you would like us to cover certain topics, hit myself and Amber up on Twitter. Our handles are in the description, and we'll see you next week. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.